Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever and spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. I've been on the ground until I finally found something that would turn it all around. Funny how it all looks so differently since I know that I'm on my way. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us when we're together. We can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Namaste! How are you? Ready? Oivlim! India! Thank you, thank you, thank you, and welcome all of you to the Manager Seminar 2022. आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आज? Very good, very good. But we cannot start a manager seminar without our top leaders. So we would like to invite the regional top 15 from North India to help us opening this seminar. Let's have them out here. जोरदार तालियों से वेलकम करें हमारे रीजनल नॉर्थ के टॉप 15 लीडर्स। Stop in my mind.
Thank you so much. Thank you. Thank you. See you. Okay. I love this room. It's a very intimate room where we finally, after 2.5 years, can come together, celebrate, laugh, smile, jump up, and be together. Very, very important ingredient in Oriflame. बहुत अच्छा लग रहा है इस कमरे में 2.5 साल बाद हम सब इस तरह से मिल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एक साथ. So again, warm congratulations to all of you. How many in this room are in an Oriflame seminar for the first time? आप में से कितने लोग हैं जो ओरिफ्लेम के कोई भी सेमिनार में पहली बारी आए हैं? प्लीज अपना हाथ खड़ा कर ले. All right, very good. Welcome and big congratulations to all of you. How many in this room have been to at least one seminar in the past? That must be everybody else. All right, and big congratulations to all of you as well. Now, when we start seminars in Oriflame, especially a seminar like today, many people, 80% of this room are here for the first time. जब भी हम कोई भी सेमिनार शुरू करते हैं, स्पेशली इस तरह का कोई सेमिनार, तो 80% से ज़्यादा लोग पहली बारी आए होते हैं ओरिफ्लेम के सेमिनार में. And it's so interesting to see when people come for the first time to an Oriflame seminar, they walk through the door, they're a little bit nervous and quiet, they're wondering what's going on, where should I sit, right? And after one day with Oriflame, everybody's like, whoa, ooh, crazy, fantastic, right? हमेशा ऐसा ही होता है, जब पहली बारी आते हैं तो थोड़े मन में क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ बैठे एकदम चुपचाप से, और जब तक आप वापस यहाँ से जाएंगे इसी तरह की एनर्जी लेके जाएंगे. And I love to see that transformation in people. And I'm here to tell all of you today that you can be as loud as you want to. You can shout, scream, laugh, cry, and be that person that you always wanted to be. और मैं आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि यहाँ पर आकर आपको जैसे चिल्लाना है, जैसे सेलिब्रेट करना है, वैसे करिए, वही बनिए जो आप बनना चाहते हैं. How many here missed the Oriflame seminars over the past 2 years? आप में से कितने लोगों ने मिस किए ये सेमिनार पिछले 2.5 सालों में? All right. Very good. We also missed all of you. And we are very happy that today we can kickstart Q2 of 2022 with the first manager seminars. And hopefully, Bhagwan Kare, we will have many more seminars during 2022. और आशा करते हैं कि यही सेमिनार शुरुआत हो बहुत सारे सेमिनार्स की एक साथ. So the theme this year, I love this theme, Together Towards Tomorrow. It really means that all of us in this room are now gearing up, making sure we are ready to take our business and our business partners, our downlines, with us on a journey towards success. हमारी इस साल की थीम बहुत ही खास है और हम एक साथ मिलकर आपके साथ में, डाउनलाइंस के साथ में आगे बढ़ें सक्सेस की तरफ. Together towards tomorrow. Leaders understand that working together is of course much smarter than trying to work it alone. और लीडर्स ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि अकेले काम करने से बेहतर है टीम के साथ काम किया जाए. So many of you in this room are managers today, 12, 15, 18 senior managers. This seminar is for all of you. And this seminar is a platform for all of our managers across India to decide to take that leap forward, building a business that 3, 4, 5 years from today can be enormously profitable. और आप सब जो इस कमरे में बैठे हैं 12%ers 15 and above हैं, तो ये
जो सेमिनार है और जो भी आज आप सीख के जाएंगे आपके लिए फाउंडेशन होगा ताकि अगले आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों में आपका बिजनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो. And we will do this by igniting friendships, by making sure that we combine the best of two worlds, that we combine the online situation to the offline situation. And by building and igniting friendships, we do that best when we meet together. और हम एक साथ मिलके बहुत सारी फ्रेंडशिप्स करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो. हमारी कम्युनिटी, हमारी टीम्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. I know that some of you in this room are now streaming live, and you are sending out Instagram live to your network and so forth. That's fantastic. The more you share, the more you will ignite friendships. और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव अपनी टीम्स तक ये सेमिनार पहुँचा रहे हैं, और यही एक ज़रिया भी है जिससे आप अपनी फ्रेंडशिप्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं. Today, we can see that the usage of brand ambassadors around the world has significantly reduced. और हम देखते हैं कि पूरे विश्व भर में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनका काम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है पूरे विश्व भर में. There are brand ambassadors in India who do advertising around fridges and car tires and jewelry and clothing. Where is the authenticity? And that's what more and more companies are seeing, and therefore turning their eyes to influencers. और अब वक्त ऐसा आ गया है कि बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर्स जो हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं वो फ्रिज के लिए भी एडवर्टाइज करते हैं और कार के लिए भी, और ये कंफ्यूज कर देता है कस्टमर को, और इसीलिए बहुत सारी कंपनीज अब इन्फ्लुएंसर्स की तरफ मुड़ रहे हैं. All of you in here, every person in this room who is on social media is also an influencer. और आप सब जो इस कमरे में मौजूद हैं और अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आप सब भी इन्फ्लुएंसर्स हैं. And the more you focus on working on you as a personal brand, the more inspiration you will be able to send out in your community. और जितना ज़्यादा आप अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. When the pandemic started, some plus 2 years ago, I decided that I too would be on social media. और कुछ 2 साल पहले जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब फ्रेडरिक ने भी डिसाइड किया कि वो भी सोशल मीडिया पर आएंगे. And 2 years later, I now have a bunch of followers. और 2 साल बाद मेरे पास में है बहुत सारे फॉलोअर्स. And many of them are, of course, brand partners. I'm sure that many of you are following one of my social media handles. But there are thousands of other people who get inspired by what transgresses on my social handles. और इनमें से फॉलोअर्स में से बहुत सारे ब्रांड पार्टनर्स हैं, आप लोग हैं, बट हमारी ओरिफ्लेम कम्युनिटी के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं फ्रेडरिक को और इंस्पिरेशन पाते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में. And you can see that every famous person, be it a politician or a celebrity or a singer or anybody, everybody has a social media account today because that's the eye of who you are. और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, इंस्पिरेशन पाते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है कि आप भी उसको फॉलो करें और अपना खुद का एक ब्रांड बनाएं. Good. So take many photographs. We have lots of photo opportunities for you outside. Make sure you share this with your downlines when you come back and tell them, next manager seminar, I want you to be here. सो बहुत सारी फोटोग्राफ्स लीजिए, बाहर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इंश्योर करें कि आप अपने डाउनलाइंस को इंस्पायर करें कि वो भी नेक्स्ट टाइम आपके साथ हॉल में बैठे हों, सेमिनार अटेंड कर रहे हों. Right, let's talk about something else. Let's talk about emotions. सो आइए कुछ और बात करते हैं. And when we look at emotions, I want to compare here. You can see this slide here, or the chart. On one hand, you have an employee like me or Shefali. And on the other hand, you have an entrepreneur. And you see, the longer Shefali and I work,
the less our motivation becomes. When we get older and more tired and saying the same thing on stage, and But as an entrepreneur, you are supposedly self-motivated. So इस ग्राफ पे आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, उम्र बढ़ती चली जाती है, थकावट महसूस होने लगती है, मोटिवेशन कम होने लगता है. पर एज एन एंटरप्रेन्योर आप देख रहे हैं ग्राफ बिल्कुल ही दूसरा है. किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन और भी बढ़ता चला जाता है और उसका उम्र से, एनर्जी से कोई कनेक्शन नहीं रहता. The more you work, the more you earn, and the more you earn, the happier you become. जितना ज़्यादा आप काम करते हैं उतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं और जितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं उतनी ज़्यादा खुशी भी मिलती है. But sometimes as an entrepreneur, it's tough. Sometimes things don't go your way. And you're waiting, your downlines are lazy, your upline is pagal, the Oriflame company is crazy. Everybody else's fault. और कई बारी एज एन एंटरप्रेन्योर ऑब्वियसली मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. कभी कभी डाउनलाइन लेजी हो जाती है, अपलाइन आपको बहुत परेशान करती है, कंपनी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती. But between the roller coaster of mood swings, if you earn a little bit more money each month, your mood increases. पर इस सारे रोलर कोस्टर में डिफरेंस ये रहता है कि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है आपका मोटिवेशन और आपका मूड भी और बेहतर होता चला जाता है. So this slide here is a roller coaster, and the roller coaster of an entrepreneur, up, down. Here, the Plenty program is fantastic. Everybody, oh yeah, super. Plenty program. Next month, oh Plenty program, yes. ठीक है? You have to remember that you are supposed to motivate you, nobody else. इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. So your attitude in combination with what actions you take every month decides how far you go. और आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप क्या एक्शंस लेते हैं और आप कितना दूर तक जा सकते हैं. Right? And you need both. You need to have a positive mindset and you need to take a lot of actions. Only having a positive mindset sitting at home is not going to lead you to new recruits. It's not going to lead you to new titles. You need that action. But you also cannot only take action without being positive. Because if you take negative actions, that will have a negative impact on your business. So you need both. ठीक है? So याद रखें कि सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर घर पे बैठ जाने से काम नहीं होगा. उससे मैच करने पड़ेंगे बहुत सारे एक्शंस और तभी जाकर आपका नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल आएगा. Now you are all here today because you are leaders in Oriflame. So I will be talking to you as if you were leaders. And I see a couple of challenges right now. I want to address them with all of you and I think you can concur with me. और आज आप सब लीडर्स हैं यहाँ पर बैठे और आपके साथ में कुछ बातें करना चाहेंगे कुछ चैलेंजेस के बारे में so that मिलकर हम उनको ओवरकम कर सकें. So on the top right corner here, you can see that right now, when I look at Oriflame here in India, we do a lot of good things, but we need further product culture in our business. We need to really and truly be generating usefulness to our customers. And that is more benefits than just the price. Today I feel many brand partners around India are focusing on the price. We will never be able to compete with the cheapest brands in India, never. We don't want to compete with the cheapest brands in India. So for brand partners to be able to offer something more to the customer is really and truly on the benefits of the Oriflame product, the unique selling points of the Oriflame products. बहुत ज़रूरी रहेगा कि हम फोकस करें हमारे प्रोडक्ट कल्चर पर क्योंकि आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के होते हुए भी बहुत सारे प्राइसेस जो लोग हमारे सोचते हैं हमारे ब्रांड पार्टनर्स फोकस करते हैं अरे ये और प्रोडक्ट सस्ता हो जाए तो बेटर होगा वो कभी नहीं होगा क्योंकि हम मार्केट में कभी भी चीपेस्ट ब्रांड के साथ compete नहीं कर पाएंगे
क्या हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, जो कि हमें मिलकर हमारे ब्रांड पार्टनर्स को समझाना है और उन्हें सिखाना है कि हमारे प्रोडक्ट्स में कितना पावर है. I sometimes hear people telling me that, oh, some of my downlines cannot make 100 BP. Some of my downlines cannot make 100 BP. Well, if they cannot make 100 BP, they don't have enough customers. It's as simple as that. 100 BP is having 5 customers placing 1,000 orders each. That's pretty much what it is. We need to make sure we have customers for our business so that we don't stock up and buy products each month only to give them away. Why should we do that when there are crores and crores of people around India who enjoy our products? सो बहुत ज़रूरी रहेगा ये जो सवाल बार बार उठ के आता है कि मेरे ब्रांड पार्टनर 100 बीपी नहीं कर पा रहे हैं. सो जब वो 100 बीपी नहीं कर पा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं हमारे देश में, और हमें इंश्योर करना है कि हमारे हर ब्रांड पार्टनर का कस्टमर बेस बढ़ जाए. सोच के देखिए, अगर एक ब्रांड पार्टनर के पास में 5 भी कस्टमर्स होंगे तो हर महीने 1,000 रुपए की उन्होंने शॉपिंग करी और हमारे ब्रांड पार्टनर का 100 बीपी हो गया. हम उस फैक्ट को क्यों हट रहे हैं उससे? When you recommend products based on the benefits of those products, a customer will like those products and be your repeat customer month in, month out. But if you only sell a soap because this month it's 49 rupees, then the next month that customer has no incentive to buy from you again. We really and truly need to bring back the product culture into our business. और जब आप स्किन केयर, वेलनेस जैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं तो आपका हर कस्टमर हर महीने उन्हें कंज्यूम करके वापस आपके पास में आता है. पर अगर आप सिर्फ सोप्स को प्रमोट करते हैं, एक बारी वो खरीदा और उसके बाद में अगले महीने फिर से उनके पास में ऑर्डर नहीं रहेगा. So that's one challenge, product culture. Another challenge is the lack of trainings. We need now, when we are able to meet again, we need to focus on trainings, making sure we have our networks meeting as often as possible, both offline and online. और दूसरा हमारा चैलेंज है हमारी ट्रेनिंग्स. अब क्योंकि सब कुछ खुल गया है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जाके मिलना और उनके साथ में ट्रेन करना, आमने सामने बैठकर उन्हें सिखाना. But training only the same people over and over and over on the same things over and over and over is not going to generate success for you. Many times when we do online trainings, I'm sure you as well as myself have seen some very strange things. People forget their camera on, some ladies lying in the bed watching, another person has the phone next to her stove making chapati. You know, how focused are they? But if you combine offline and online, you will have a much better results. और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें कि आप कहीं सेम ही ब्रांड पार्टनर्स को बार बार तो नहीं ट्रेन कर रहे. शायद आप खुश हो रहे हैं नंबर्स देखकर, बट शायद आप बाकी उन्हीं लोगों को बार बार ट्रेन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा. हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग में बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी. कौन ध्यान से सुन रहा था, कौन कैमरा गलती से ऑन हो गया, सो रहा है, खाना बना रहा है, बर्तन धो रहे हैं, क्या वो रियली फोकस थे आपकी ट्रेनिंग की तरफ? Right. So we have a couple of challenges, and I think together we will make sure we rectify those, make a course correction, and move forward. और कुछ जो challenges हैं, एक साथ मिलकर उन्हें ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे. The more your people know about Oriflame, the more equipped they are for building a big business. I have heard a few months ago, I heard some leaders telling me, oh, Frederic, can we extend the business bonanza? I said, why? Oh, it was so successful program. But you know, it took me 3 months before I understood it. 3 months? Kya baat hai? You have to make sure you understand the programs right there and then when they are launched. We as a company only launch programs to help all of you. Not because we want to have programs, but we want to have ammunition for you to go out and build a bigger business. That's why we have these programs. And you as a manager, as a leader, have to take it upon your responsibility to learn.
कुछ समय पहले एक लीडर ने आके फ्रेडरिक को रिक्वेस्ट किया कि बिजनेस बोनांजा को एक्सटेंड कर दिया जाए. बहुत अच्छा प्रोग्राम है बट 3 महीने लगे उसको समझने के लिए. 3 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है. हम प्रोग्राम्स लेकर आते हैं ताकि आप और आपका नेटवर्क उसका फ़ायदा उठा के स्पीड बढ़ा सकें. बनता क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलकर समझना कि क्या प्रोग्राम्स आए हैं और उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं. Right. So, looking forward, I want to share with all of you what I believe is crucial for an entrepreneur. And all of you in this room today are entrepreneurs. All of you have come here because you're interested in the business and you can see the potential with Oriflame in the future. आप सब जो इस रूम में बैठे हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं. आप सब जानते हैं, समझते हैं आने वाले समय में इस बिजनेस में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और आप क्या पा सकते हैं. So as an entrepreneur, the first thing you have to do is to make sure you have a clear vision of where you want to be in the future. और सबसे पहली चीज़ एंटरप्रेन्योर बनते ही आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप फ्यूचर में चाहते क्या हैं अपने बिजनेस से. You have to make sure that you're focused on your business. There are thousands of things to do in a daily life, but in order for you to be successful, you have to give enough time to your business. और आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहिए. आपके विजन को कंप्लीट होने के लिए समय देना ज़रूरी है. You have to have a plan for the month of April, a plan for quarter 2, a plan for 2022. You have to know where you are going. इम्पॉर्टेंट है जानना कि आप जा कहाँ रहे हैं. 2022 के मिड ईयर तक कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, उस साल के आखिर तक 2023 तक एग्जैक्टली पाना क्या चाहते हैं. And in Oriflame, we always say, start small, but dream big. Start small, zero investment, but dream big. And then take action every single day. ओरिफ्लेम में हम हमेशा कहते हैं शुरुआत छोटे से ड्रीम पूरे करने पर होती है, पर ड्रीम बिग करते रहिए क्योंकि बड़े बड़े सपने आपके पूरे होते चले जाते हैं अगर आप रोज एक्शन लेते हैं उनकी तरफ. As a leader, the more intimately you know your brand partners, the more intimately you know your customers, the better you will do. This is a social relationship business. ये एक बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है. तो आप अपने लोग, आपके ब्रांड पार्टनर्स, आपके कस्टमर्स को जितना अच्छी तरीके से जानेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे. You have to make sure that you build stability. Stability is more important than just running fast, stopping, staying still for a few years, running again, stopping, maybe going back a little bit, running again. It's better to move consistently forward. You take a new title, you are stable. You make sure you plan for the next title and you move forward. Stability is more important long term than speed. ठीक है? So ज़रूरी क्या है, डेली एक्शंस लेते लेते आप अपना बिजनेस स्टेबली बढ़ाते चले जाएं. ये कोई रेस नहीं है. आपने स्पीड में एक जगह पर पहुंच गए और फिर वहाँ रुककर सालों तक वहीं रहे, फिर उसके बाद में फिर रेस करी आपने. सो अच्छा क्या रहेगा, डेली एक्शन से आप स्टेबल बढ़ते चले गए और जो भी टाइटल अचीव किया उसको रखा और फिर अपनी टीम्स के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएं. If you can do both, nothing like it. Fantastic. But focus because it is your earnings. It is your future. और अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, स्टेबिलिटी और स्पीड का, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी इनकम, आपके टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. Make sure you build an energized and positive tribe of people around you. People who are like you, people who want to grow, people who want success, and more importantly, people who are ready to commit and put in the actions. इंश्योर करें कि आप अपने जैसे एनर्जेटिक लोग अपने साथ में जोड़ें और उनके साथ में आगे बढ़ें क्योंकि वही आपको बहुत अच्छा सक्सेस लाएगा. And have perseverance. I promise you things will go wrong from time to time. I promise you some months will be tougher than you had imagined. But if you are perseverant
If you are really persevering all the challenges and you're building upwards, you never stop. You must never give up, because success could be just one step away. आपको इतना कह सकते हैं, चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, पर अगर आपका एटीट्यूड हमेशा आगे बढ़ने का है तो उस चैलेंज को भी आप ओवरकम कर पाएंगे. हमेशा कोई ना कोई जरिया या रास्ता आप निकाल पाएंगे. And then make sure you take consistent actions every month. I know some leaders, they become a new goal director and they're like, ooh, I'm a goal director, yoo. And then they celebrate for 3 months. Come ni. Just, oh, celebrate. And then they say, oh, after 3 months, oh my gosh, I lost some business. Oh, now I have to start again. You know, where do I start? Yeah, go ahead and celebrate. I love when you celebrate. But make sure the next day is a new day. Chale? Unless you want to be at gold for the rest of your career. बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं हमने जो गोल्ड डायरेक्टर बने, बहुत सेलिब्रेशन करी, 3-3 महीने तक सेलिब्रेट किया और फिर देखा अरे मेरे बिजनेस कैसे कम हो गया. सो सेलिब्रेट करें, उसके अगेंस्ट नहीं है, बट सेलिब्रेशन के साथ में काम भी जारी रखें. Right. Then also, as managers, as leaders of your own business in Oriflame, there are a few responsibilities of an Oriflamian. और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी ओरिफ्लेमियन बनने की. And I want all of you to share these responsibilities together. They are very, very simple, but really and truly they signify Oriflame. और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सिग्निफाई करती हैं ओरिफ्लेम को. First is to live the Oriflame culture, togetherness, spirit, and passion. In Oriflame, we care about people. We care about products. We care about the business opportunity. And we care about all people, men, women, Christians, Hindus, Muslims, Buddhists, everybody. That's togetherness, spirit, and passion. और टुगेदरनेस स्पिरिट पैशन इसमें भी है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कौन से मज़हब को फॉलो करता है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सब इस कमरे में पूरे विश्व भर में सिर्फ ओरिफ्लेमियंस हैं. Make sure you know all the tools and all the programs from the back of your mind so you can easily explain to your downlines how they can benefit from an action, from a program, or from a tool. हमेशा ध्यान रखें कि आपको हर कोई प्रोग्राम, हर कोई टूल की पूरी नॉलेज रहे. And I come back to the product culture. Be a product of the product. My favorite product is the wellness range. Every morning I start my day with a wellness shake. And when I feel good about myself, I feel that I look good and I feel happy, I really and truly do a better job. That's how simple it is. And when I talk about wellness and my own experiences, I'm a product of the product. And I think all of us should be products of the products. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स को हमेशा इस्तेमाल करें, उनमें ट्रूली बिलीव करें. फ्रेडरिक का फेवरेट प्रोडक्ट है हमारा वेलनेस शेक जो कि आ चुका है. फ्रेडरिक, there's some shake for you here as well. Very good. I'm speaking about my favorite product. हर रोज इसको इस्तेमाल करते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम अपना जो भी प्रोडक्ट पसंद है उसमें ट्रूली बिलीव करें, उसको फॉलो करें, ट्राई करें. Right. Also, you have to make sure that you trust yourself. Trust yourself. How many here feel confident that you can become goal directors in the future? अपने आप को ट्रस्ट करें. और आप में से कितने लोग हैं जो ये विश्वास रखते हैं कि आप गोल डायरेक्टर बन सकते हैं फ्यूचर में? Okay, very good. So you trust yourself. That's the first step. The second step is to trust your partners, your brand partners, your downlines. You have to trust them as much as you trust yourself. और आपको ट्रस्ट करना ज़रूरी है अपने ब्रांड पार्टनर्स को भी, अपनी टीम्स को भी. And of course, lastly, you have to trust your business partner, Oriflame. You have to make sure you understand that Oriflame takes actions so that you can benefit by building a business together with Oriflame.
और हमेशा याद रखें कि इम्पॉर्टेंट है आप भी ओरिफ्लेम पर पूरा उतना ही विश्वास रखें. टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्शंस होते हैं ताकि ये बिजनेस आपके लिए और भी आसान बन सके. We need to make sure we communicate. And communication, my friends, is not only forwarding a bunch of PDF files. ठीक है? Every month, I know, if you look at all the data being shared with 3 lakh Oriflame consultants, there's a lot of data that people just forward, and then hope for the best. Oh, I hope somebody places an order. Kya baat hai. You have to actively follow up. You have to reach out and contact people. You can't just forward a bunch of digital information and hope for the best. You have to follow up. So communication की जब बात करें, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे PDF फाइल्स, फ्लायर्स जो भी आते हैं आपने बस फॉरवर्ड कर दिए और फिर पूजा करी कि बस ऑर्डर आ जाए. उससे काम नहीं होगा. आपको एक्शन लेना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में. I know that some managers in here today, some 18% managers, 15% managers, some of you are working with 3%ers and 6%ers. Every month, those 3%ers and 6%ers say, yeah, this month, I promise I will be a 9%er. Ye wala month, na? ठीक है? I promise. And then the month is over, they say, oh, sorry, I couldn't do it. My uncle died for the second time. You have to make sure that you work with independent people, right? I also know that some managers tell their upline, say, oh, upline, can you help me? Can you place my orders? There was a stock out in my order. Can you call the Oriflame company? There were some damages in my order. Can you call the Oriflame company? Why can't you give me one more recruit? Many managers ask their uplines to help them with their business, actually by doing their business. So जब हम बिजनेस में इंडिपेंडेंट लोगों को क्रिएट करने की बात करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भी 3-6% लोगों के साथ काम करते हैं जो हर महीने आपको प्रॉमिस करते हैं कि इस मंथ पक्का ग्रोथ आएगी, इस मंथ हम पक्का मैनेजर बनेंगे, और महीने ख़त्म होते हुए बहुत सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं, सास गुस्सा हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और फिर वो बहानों की वजह से फिर से वो मैनेजर नहीं बनते. ऐसे बहुत सारे मैनेजर्स भी हैं जो ये भी कहते हैं अपने अपलाइन को कि मैंने एक रिक्रूट तो कर लिया, अब आप करा दो, स्टार्ट हो गया है बट 100 BP कंप्लीट कराना है, आप करा दो. और वही चीज़ आपके बिजनेस में आपके लिए सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है. If I was a leader and Shefali was my downline, and she said to me, oh, Frederic, can you help me? Can you place my orders? Can you get me a recruit? Can you do this? Can you do that? I would say, yes. Give me half your PD. 50%. Chale? You are there as leaders to create independence, not to create dependence upon you. And each person is supposed to work for him or herself together with you. और यही आपने एग्जाम्पल देखा कि अगर मैं फ्रेडरिक की डाउनलाइन इस तरह की होती, जो मैं कहती मेरे को पीडी, मुझे बीपीज में हेल्प कर दो, रिक्रूट में हेल्प कर दो, तो 50% जो पीडी है वो भी वो रख लेते. And then lastly, as I opened this seminar today, I said, hey, be the person you want to be. Who is that person you've always dreamt to be? Well, in Oriflame, you can be that person. You can really be that. We don't think anybody is pagal in Oriflame. We love everybody, from 0%ers to president directors. So take the opportunity and be the person that you want to be. And I tell you an example. A few months ago now, I had an interview here in Delhi with Economical Times or Economic Times. And after the interview, it was a TV interview. After the interview was done, the journalist asked me, she said, hey, Frederic, you're the CEO of Oriflame, Vice President South Asia, board members of Indian and Swedish companies. I just have to ask you, why do you have so many tattoos? I said, well,
I have many tattoos. And I said, because I love them. They're art. I don't care if somebody else don't like them. They're for me. They're not for you. So you have to be that person that you want to be, not only caring about what others think. Thank you. Translation? सेमिनार के शुरुआत में कहा था कि वही इंसान बनिए, पर्सन बनिए जो आप बनना चाहते हैं. और हम लेवल के हिसाब से आपसे प्यार नहीं करते. 0% से लेकर प्रेसिडेंट डायरेक्टर तक हम हर एक को उतना ही प्यार करते हैं, उतने ही आप हमारे लिए ज़रूरी हैं. और वही इंसान बने जो बनना चाहते हैं का एग्जाम्पल फ्रेडरिक ने एक इंटरव्यू दिया. इकोनॉमिक टाइम्स, इतना बड़ा पेपर हम सब जानते हैं. उसके बाद में एक टीवी का इंटरव्यू हुआ. ख़त्म होने के बाद में टीवी जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप सीईओ हैं, इधर के एमडी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, इतने सारे स्वीडिश और इंडियन कंपनीज के बोर्ड मेंबर भी हैं, उसके बावजूद आपके इतने सारे टैटूज़ क्यों हैं? तो फ्रेडरिक ने उनको यही जवाब दिया, टैटूज़ उन्हें बहुत पसंद है और वो एक फॉर्म ऑफ आर्ट है. वो किसी और के लिए नहीं बट उनके खुद के लिए है. सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है जो आप ज़िंदगी में बनना चाहें, जैसे आप होना चाहें वही इंसान बने. Right. So, what are we in Oriflame? I want to take this opportunity today when there are so many people who are here for the first time to clarify what are we in Oriflame. सो इतने सारे लोग आज बैठे हैं, क्लैरिफाई करना चाहेंगे हम आपके साथ कि हम हैं कौन. And before I clarify what we are, I must really and truly clarify what we are not. ठीक है? What we are not. So let me clarify. Oriflame is not a plenty program company. Oriflame is not a business class company. We're not an invitation campaign company. We are not a discount-driven company. Oriflame, we are Oriflame, and we are a company based on dreams, where all of you can fulfill some of your dreams together with Oriflame. That's what we are, right? Sometimes we have different actions, different months. And let me be honest with you. ठीक है? बात सुनो यार, हाँ, ठीक है? Let me be honest. For you, we don't have the plenty program gifts. They're not for you. Recruitment campaign gifts are not for you. ठीक है? Those are for people for the first time to make an effort, either by recruiting and getting a small handbag and they like it, or by placing an order, then get a small gift. They're not for managers. Yar, you have to understand, right? But we give it to you because we love you. But it's not for you. बस हो गया? I don't think that needs translation. Yeah, where to start? Anyway, feel free to talk to Shefali in the break. We are also an entrepreneur-driven company. We make sure we foster entrepreneurship, and we help developing entrepreneurs every single day, and so do you. हम हर रोज़ एंटरप्रेन्योर्स बनाने की एक मशीन है. हर रोज़ आपके साथ में मिलकर इस कंपनी में एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं. We are also a company with a human touch. We care about you, the people. We care about you first before we care about profits. And I can tell you that by my 15 years of experience. We have had some markets where we are not selling so well, and the cost is eating up the profits, and we are making a loss. But we have stayed in those markets for decades because we have a responsibility towards the leaders. You will not find any of our competitors doing the same thing, I'm telling you. हम एक कंपनी है जो कि एक ह्यूमन टच के साथ में है, और इसका इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे सकते. 15 साल से फ्रेडरिक का एक्सपीरियंस रहा है कि इस कंपनी में लोग ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिट से. ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर बिजनेस इतना अच्छा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, और कॉस्ट जो है
वो ज़्यादा बड़ा है प्रॉफिट से। फिर भी क्योंकि वहाँ के लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति, इसीलिए हम अभी तक वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। All right. This slide here, there's one light bulb and there's a lot of wrapped up paper. And this slide describes the law of averages. Law of averages. Are you familiar with that? और ये स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं लॉ ऑफ एवरेज। उस लॉ से क्या आप वाकिफ हैं, जानते हैं उसे? All right, I will explain to you. It's very simple. Let's say that I am a new brand partner in Oriflame. Today is my first day. Shefali is my sponsor and she tells me to recruit. ठीक है? Frederic, go and recruit. So अगर एक्सप्लेन करें तो फ्रेडरिक को रिक्रूट किया गया है और अगर मैंने किया है मैं जाके बताती हूँ, बोलती हूँ जाइए आप रिक्रूट करके आइए। Right? So I go out, I talk to 10 people. How many people do you think will join? I talk to 10 people. How many do you think will join? I'm new in Oriflame. एकदम नए हैं ओरिफ्लेम में और 10 लोगों से बात करके आए हैं, तो आपके हिसाब से कितने लोग ज्वाइन करेंगे? She's saying 1, 2, 1. Yeah, I agree. Well, let's say one person joins. I'm new. I don't know exactly what to say. I'm a little bit nervous. So one person joins my team. एक पर्सन ने ज्वाइन किया, मैं नर्वस हूँ, तो कहते हैं कि एक ने ज्वाइन किया। Now I have a ratio. 10 is to 1. I talk to 10 people, one person joins. I talk to 10 more people, one person joins. All the other people, all the other 9 people who say no, it's okay. I'll talk to one more. 10 people, 10, 1 person out of 10 will join. 10 people, 1. 10 people, 1. 10 people, 1. Okay? And then I get a little bit better. What happens? I increase the ratio. Now I talk to 10 people, 2 people join. Right? So इसी को लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं। अगर हम देखें तो 10 लोगों से बात की, एक ने हाँ करी, फिर और 10 से बात की, एक और ने हाँ करी। अब क्योंकि मैं न्यू थी और हर बारी में 10-10 लोगों से बात करते जा रहे हैं, तो वो एक का कन्वर्जन फिर शायद 2 की तरफ बढ़ा। Right? And I keep doing this. I keep doing this every day. I get slightly better. I get slightly better. After a couple of months, my ratio is 10 is to 3. I talk to 10 people, 3 people join. ठीक है? और फिर वो रेशियो बढ़ता चला जाता है और शायद 10 में से फिर 3 लोग जुड़ने लगते हैं। Right? Then I say to Shefali, Shefali, you are my upline. I want to have a competition with you. I want to have a recruitment competition. And Shefali has been many years in Oriflame. She's like, yeah. What can you do? I mean, yeah. You know, when I talk to 10 people, 6 people join. Shefali tells me. I say, oh my gosh, I talk to 10 people, 3 people join. But it's okay. Let's have a competition. Most number of recruits in 1 month. ठीक है? उसके बाद में अगर फ्रेडरिक, क्योंकि वो डाउनलाइन है, उन्होंने आके अपलाइन को ये बोला कि चलिए कंपटीशन करते हैं रिक्रूटमेंट का। और यहाँ पर अपलाइन जो है बहुत एक्सपीरियंस है ओरिफ्लेम में और उनका एवरेज क्या है, 10 लोगों से बात करने पर 6 लोग रिक्रूट होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर भी कंपटीशन कर लेते हैं क्योंकि डाउनलाइन इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं। So Shefali goes out, she talks to 10 people, 6 people join Shefali's network. I go out, I talk to 30 people. How many people join my network? 9. Who wins? I win. Right? It's law of averages. The more people you talk to, the more people will join. That's how simple it is. सो कंपटीशन कौन जीता? डाउनलाइन, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनका एवरेज था 10 लोगों से बात कर कर एक रिक्रूट होना। उन्होंने 30 लोगों से बात की, 9 लोगों ने रिक्रूटमेंट पाया और यहाँ पर अपलाइन ने 10 से बात करके 6 लोगों को रिक्रूट किया, तो जीते फिर भी हमारे डाउनलाइन। Right? So I win and I want to win because I love to win, but I also want Shefali to lose because I love her to lose, because losing is the only way to learn for the future. ठीक है? And Shefali is just an example here, right? Just to be very clear. So यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर जीतना पसंद है तो जरिया ढूंढा जीतने का, और लूज करना भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक हारते नहीं हैं तब तक सीखते नहीं हैं। So now I can call my friends. I say, hi,
I want you to join. I have a party at my home on Friday. Why don't you come over? And my best friend, he knows all about Oriflame. He's like, no, I don't want to come. It's about Oriflame. I told you I don't want to buy any products. I told you I don't want to join. Whatever you are doing, I think is fantastic, but I don't want to go. I said, okay. It's okay. I need you to come because 3 people will join if 10 people are there. You can be somebody who doesn't join. I don't care. But I'm working the ratio. 3:10. Okay? Once you get that ratio, everything else is just labor. Everything else is just काम करो. ठीक है? सो हो सकता है आपके वो दोस्त आपको मिले और उनको जब आपने इनवाइट किया कोई होम मीटिंग या पार्टी में मना कर दिया, नहीं मेरे को नहीं ज्वाइन करना, ओरिफ्लेम की बात करोगे. कोई बात नहीं, फिर भी आप आओ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आप वो इंसान हो सकते हो जो मना कर रहा हो ज्वाइन करने के लिए. सो कोई बात नहीं, आप आओ. और क्योंकि मैं रेशियो पे काम कर रही हूँ, 10 लोगों में से 3 लोग जरूर ज्वाइन करेंगे. So in the front of this row here, you cannot see behind here, but we have Sangeeta Agarwal and Archana Kumar. Both of these 2 ladies have been with Oriflame for 26 plus years. ठीक है? 26 plus years. Can you guess how many times they have heard the word no? Probably lakhs of times. I cannot even imagine. Ask them later on. Did they give up? No. They worked the law of averages. Keep talking to people because there are always people who want to join. आप यहाँ पर फ्रंट रो पे बाद में मिल पाएंगे, देख नहीं पाएंगे इन्हें इस वक्त क्योंकि आप पीछे हैं अभी बैठे. संगीता एंड अर्चना कुमार दोनों ने एक्चुअली उन दोनों का एक्सपीरियंस 26 साल से ज़्यादा है ओरिफ्लेम में. सोच के देखिए कितने सारे लोगों से नो सुना होगा, और अगर गिव अप कर लिया होता उस टाइम पर तो शायद आज यहाँ नहीं होते. सो लाखों लोगों को नो सुनते हुए भी आगे बढ़े और आज आइकन्स हैं ओरिफ्लेम इंडिया के. This slide here, it says true leadership is epic. This slide I made 2010 when I became the boss of Asia. 2010. This is 12 years old, but I still very much believe this holds true today. ये स्लाइड जो कि ट्रू लीडरशिप की है 2010 में फ्रेडरिक ने बनाई थी जब उन्होंने एशिया को टेक ओवर किया था. And I believe a leader has to be energetic, has to truly motivate people and be able to bring people along on the journey towards success. You can't be a leader who says, oh, you know, did you hear about the new Go conference, Arti? It's in Seoul, very exciting. You know, she's going to fall asleep before I can even explain where we are going, right? You have to say, hey, listen, Sangeeta, I got to talk to you. There's a new conference, and we're going to Seoul, Korea, and we're going for the first time. Are you coming with us? That's energy. And you have to have the edge to make decisions, to move forward, to try new things. Don't be so afraid. What's the worst thing that can happen? You fail. And then you dust yourself off and you keep moving forward. That's it. ठीक है? You have to have energy and you have to have edge. हमारे बिजनेस में एनर्जी और एज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपने देखा एक एग्जाम्पल जहाँ पे बिना एनर्जी के फ्रेडरिक ने बात की और एक तरफ एनर्जी दिखाई. आई एम श्योर आप खुद भी कौन से साइड ऑफ द लीडर पर जाना चाहेंगे जिनमें इतनी एनर्जी है, और हर वक्त एज ओरिफ्लेमियंस उतनी ही एनर्जी अपने अंदर रखनी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है और अपनी टीम्स में भी वही ट्रांसफर करना ज़रूरी है. I see a clear difference in leaders who are successful with Oriflame based on their passion. The more passionate they are, the more they care about their business, the more they care about their people, the more they care in general, the further they go. Passion is an important ingress in leadership. देखा गया है कि जो भी हमारे लीडर्स जितना ज़्यादा उनमें जुनून रहता है उतने ज़्यादा सपने पूरे होते हैं और उतने ज़्यादा ही वो सक्सेसफुल रहते हैं ओरिफ्लेम में.
to be interested in people, to be interested in the business, to be interested in new product launches, in new sales tools. To be interested is a leadership attribute that you mustn't falter upon. आपका लीडरशिप एटीट्यूड इस तरह का होना चाहिए हमेशा कि आप में इंटरेस्ट हो सीखने का, जानने का कौन से नए टूल्स हैं, कैसे काम करते हैं, जानने का हर नए प्रोडक्ट के बारे में. And I believe very much in being candid with people. This year, beginning of this year, I called all the top 15 leaders in India. और मैं बिलीव करता हूँ कि आप अपने बिजनेस में जितना ज़्यादा खुलकर ओपनली बात करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है. इस साल के शुरुआत में मैंने हर टॉप 15 लीडर को इंडिया के उनसे बात की. Some came to my office and some were on Teams online. But I had a very clear question. What shall we be expecting from you this year? And they had a very clear answer to me. So much easier to be in a relationship with anybody if you can be open, honest and candid. और उन सब से एक ही सवाल पूछा. कुछ लोग ऑफिस में आए और कुछ लोगों को ऑनलाइन मिले. सवाल यही था कि इस साल आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. और जवाब में एक बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही क्लियर रिप्लाई मिला. इसलिए हमारे बिजनेस में अपनी टीम्स के साथ भी एकदम सच्चाई के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में कैंडिड होना बिल्कुल ज़रूरी है. And then you have to make sure you have the mindset. Life is difficult. Sometimes building a business is difficult. But if you have the right mindset, you can persevere and you will become successful. And you have to have the right mindset before you become rich. Before the money is in your pocket, your mind needs to be correcting wherever you are going. And that, I think, is so important. We talk about attitude, we talk about emotions, making sure that our attitude and our actions are in line, and then we will be successful. And this is what being an entrepreneur is. Some days are tough, some days are good. After some good days come some more tough days. And after some tough days come more good days. And that's life in general. You have in the palm of your hand, you have the business opportunity that is Oriflame. What you do with it is up to you. I know that some in this room will become gold directors. I know that some in this room will become diamond directors in the future. And I know some in this room will become part of India Top 50. But I don't know who. I just don't know. Only you know who. And you have to ask yourself the ultimate question today. Are you going to be successful with Oriflame? Are you going to travel the world? Are you going to stand on stage making a testimonial where people look at you in awe? Are you going to be that person? हमने माइंडसेट की बात की है. माइंडसेट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप अपने मन में, अपने दिमाग में क्या लेके जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात की, हमने बात की इमोशंस की. हाउएवर डिसाइड आप करते हैं. जानते हैं इस कमरे में ऐसे भी लोग हैं जो गोल्ड डायरेक्टर ज़रूर बनेंगे, ऐसे लोग भी हैं जो ज़रूर डायमंड बनेंगे, और ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया टॉप 15 में आना चाहेंगे और आएंगे भी. बट आप में से कौन होगा वो आपका माइंडसेट ही डिसाइड करेगा. We are super excited about being here today. We are so happy that the seminars can start again. And for the next week, we are going to be very busy traveling to many of the metros of India. But then we're coming back with more seminars. We're going to Dubai. We're going to the Premium Lifestyle Conference. And we're going to have more manager seminars. You have to make up your mind. Where and why will you join us? Thank you, everybody, for being here today. Thank you so much. Good luck, and I'll see you at the top. Thank you.